Let's get started. सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आते हैं हमारे क्या चीज हु इज द फादर ऑफ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्मिथ is the father of microeconomics. Alfred Marshall. Economics is a study that deals with simple costs. Economics is a study of wealth only. It deals with population. Economics is a study of man and its soil. Marshall अल्फर्ड ने बोला था अल्फर्ड ने क्या बोलता मार्जिनलिटी अल्फर्ड ने मार्जिनलिटी के बारे में बोला था क्या अल्फर्ड मार्शल ने मार्जिनलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ठीक है ऊपर बोला था मार्जिनलिटी ठीक है according to economics is a study that studies behavior as a relationship between the end and the scarce means that the alternative the wants of humans are limited. The need for optimization, that is resolution. Robinson ने बोला था Robbins. Samuelson ने क्या बोला Samuelson ने theory of income और employment. Fuel and study how deals in society with Alfred Marshall. Alfred Marshall ने law of diminishing marginality, marginal utility थी, marginal. Ellsworth ने indifference वाला indifference का दिया. But Alfred Marshall और Paul Samuelson. Samuelson और Marshall ने ये को दिया ये income और employment and employment दिया. जॉन ने क्या दिया जॉन ने क्या दिया जॉन को हम बोलते हैं मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसने मेरे को इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये दिया मैथ्यू ने मेरे को दिया पॉपुलेशन का ग्रोथ एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं माइक्रो उसने माइक्रो दिया माइक्रो मतलब टेनेंट्स ऑफ टैक्सेशन दिया वेलबर्न इफेक्ट दिया वेलबर्न और लग्जरी प्रोडक्ट्स गिफन ने गिफन प्रोडक्ट दिया इसमें वो है कि क्योंकि प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ रही है नहीं मतलब बढ़ रही है गिफन भी नहीं कहते थे इसमें ये वो होता है your product is inferior Thompson ने क्या बोला Thomson demographic demographic transition फिशर कौन था फिशर मेरा था फादर ऑफ स्टैटिस्टिक ठीक है जॉन था फादर ऑफ मैक्रो स्मिथ था मेरा माइक्रो ठीक है Micro is a branch of science that deals with the study of individual household forms and making it that comprises market goods and services and deal with macro is a branch of science that deals with the behavior and performance of the economy in total. Most important factor decided studied in macro gross domestic product, unemployment, inflation, chemical studies a particular market segment of the economy, whole economy पढ़ते हैं. Micro deals with various issues like demand, supply, vector pricing,
product pricing, economic welfare, production consumption, like income, national income distribution, employment, general pricing. It is useful in regulating the price of a product. Along alongside the price of it is useful in regulating the price of a product alongside the price of the sector of operation. They were a broad price level like inflation. So हम लोग इसमें रहते हैं. ठीक है. Take a bottom down approach. ऊपर से नीचे जाते हैं. ऊपर से नीचे जाते हैं इसमें. ठीक है. Bottom up. नीचे से ऊपर जाते हैं. नीचे वो आते हैं. Individual unionation as unit. Price is a major determination. Income is a determination. Individual aggregate demand. Father of micro is Smith. Father of macro is John Keynes. Economic, an economic system is a mechanism which, with the help of which government plans and allocate accessible resources and commodity or environment production, combining wealth and business. Economic trade system it incorporates many companies, agencies, subjects, models, and declining procedures. Types of economies based on the level of development, based on the basis of ownership and control. Capitalism. Capitalism is a system in which economic relations are directed towards the principle of free play of market forces. Capitalism is a system in which economic relations are directed through the principle of free play of market forces. It is often characterized as market economy. Market economy किसको कहते हैं? Capitalism को बोलते हैं market economy. Procedures and consumers are free to exercise their choice. There is no central authority. All means of production, namely machine, are owned privately. Socialism क्या है? In which resources are collectively owned by the society as a whole. By the society as a whole, there is a certain authority to decide about the allocation of resources with a view to achieve maximum social welfare. Social welfare चाहते हैं. Social welfare. ठीक है? Along with equitable distribution. Under the economic government appoints a central authority to work how and what to produce. ठीक है? The public sectors dominate the private. They have a little role to play. These are the economies where market forces are free to operate. Mixed में क्या होता है? Free to operate, but not without and wards of the state, but not without watch. There's a balance between the public and keeping in mind interest of equitable distribution of wealth. Mm. There is a free price mechanism, but not without government intervention, but not without government intervention. Related to selection, what to produce, related to selection of goods to be produced according to market analysis as per consumers, how to produce, related to selection and technique of the production, labor intense technique, capital intense technique, use of more labor than capital. So developing countries are that they have a high quality of life, developed economy, technological infrastructure, highest GDP होती है इनकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI. अगर मैं HDI की बात कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें तीन चीज़ होनी चाहिए मेरे पास. एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ और हाँ एक और है यार क्या. HDI, हेल्थ हेल्थ तो हो गया. ठीक है.
एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, और क्या होता है, एक और होता है एक्सपेक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ में तो आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड्स यार। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अब मेरे पास तीन चार चीज आ जाती है। एक तो मेरा आ जाता है एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज एवरेज स्कूलिंग ईयर, एवरेज स्कूलिंग ईयर आ जाता है एक तो मेरे पास। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आ गया। फिर मेरा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। फिर आ जाता है मेरा वो नेशनल डेवलपमेंट, वो जीडी, ग्रॉस नेशनल इनकम। जब मैं एच डी आई की बात कर रहा हूँ तो एच डी आई में मेरे तीन चार चीजें आएंगी। कौन कौन सी हैं वो? एक तो ये मेरा आएगा एजुकेशन, फिर मेरा आएगा हेल्थ केयर, फिर मेरा आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा मेरा मेरा था, जो था एवरेज स्कूल, एवरेज तो है ही एवरेज। नहीं नहीं, एवरेज नहीं है यार। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, एक्सपेक्टेंसी आ गया, फिर मेरा आ गया ग्रॉस नेशनल इनकम आ गया, जीएनआई आ गया। फिर मेरा आया ये एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। फिर आ गया मेरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। Developing countries are with less developed industrial base and country lower developed country middle GDP होती है। Our country have the lowest indicator of social economic development with lowest HDI rating GDP, ठीक है। Easy access to latest technology, easy access होता है to technology, enjoy good healthcare, education and good. Have access to technology, healthcare and education. Poor access होता है इनके पास। Standard of living is high and middle level is low, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, यूएस, स्विट्जरलैंड, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी, नाइजीरिया, ये आ गया, अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, मंगोलिया। टर्शरी, अब आते हैं तीन चार सेक्टर्स हैं हमारे पास। प्राइमरी तो हमारा एग्रीकल्चर आ गया, बेटर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट और these are known as नेचुरल प्रोडक्ट्स। एग्री आ गया यहाँ पे। तो सेकेंडरी में मेरा आ गया प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वाला, are converted into other forms by manufacturing and industrial, it is known as industrial sector, industrial। फिर आया मैं टर्शरी में, यहाँ पे मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। The activity that helps in primary growth of primary and secondary, they do not produce anything but support करते हैं। टर्शरी क्या करता है, सपोर्ट करता है for production products, as there is a known as service sector। Inflation or very frequent, less frequently price inflation, less frequently is a general rise in the price level of an each unit of currency buys fewer goods. Consequently, inflation reflects a reduction in the purchasing power। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है मेरी परचेजिंग पावर कम होती है per unit। The loss of real value in the medium of exchange and unit of account when the important deflation when the price of goods decreases, price decrease कर रहा है, due to which purchasing power पीपी इंक्रीज हो जाती है। और व्हेन इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है इन्फ्लेशन, सस्ती हो गई चीजें। रिसेशन, स्लो डाउन इन फ्यू सेक्टर,
एक तो रिसेशन होता है, रिसेशन मतलब कि तीन जो सेक्टर्स थे, तीन में से कोई कुछ स्लो हो जाते हैं, जैसे प्राइमरी था, सेकेंडरी था, फिर टर्शियरी था, कुछ कुछ स्लो हो जाए। Here liquid and both are present, but there is a lack of liquidity. Hit luxurious and investment areas. Liquid होता है, liquid and purchasing power. Both are present. It lacks liquidity. When recession hit each and every sector, there is a lack of liquidity, liquidity, liquid and purchasing power. So hyperinflation बहुत तेजी से. There is an excess liquidity due to which liquids and purchasing power become appropriately null. Excess liquidity. Cause excess liquidity क्या हुआ? Liquidity. अब कॉस्ट पुश. कॉस्ट पुश में क्या होता है? ये फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है. क्यों? क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट था, जो बनाने में जो चीजें लग रही थी, उनके प्राइस बढ़ गए. बॉटल नक. When inflation is due to fall in supply side. कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाना है क्योंकि सप्लाई कम हो गई है. ठीक है. कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? ये मैं फ्यूल को हटा देता हूँ. एक्सक्लूडिंग फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी. इट इज लॉन्ग टर्म के लिए. हेडलाइन में मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फूड को भी कर रहा हूँ और इसको फ्यूल को भी कर रहा हूँ. ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है. एक्सक्लूडिंग क्रीपिंग. क्रीपिंग मतलब हल्के हल्के आ रही है. ये गैलोपिंग होती है, मतलब एक्सेलरेटिंग है. ठीक है, 10 से 40 के उसमें आ रही है. और हाइपर तो मतलब बहुत ही ज्यादा थी, 40% से भी ज्यादा की इन्फ्लेशन आ रहा है. डिमांड पुल. ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है, उस वजह से. Budget and taxation. Budget can be defined as an estimate made using expenditure and the revenue to be spent in that for a government budget on the annual financial statement. 112 में है, आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. और 110 में मेरा मनी बिल आ जाता है. 110 में मेरा मनी बिल आ जाता है. Come from Bagyut, which means leather bag. Bagyut. बजट कहाँ से आया? बेग्यूट से आया. बजट कहाँ से आया? बेग्यूट से आया. बेग्यूट. बजट कहाँ से आया? उसमें ना तीन गवर्नमेंट के बजट भी ना, रेवेन्यू, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है. रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होता है. रेवेन्यू रिसिप्ट भी मतलब टैक्स और नॉन टैक्स आ गया. कैपिटल. द मनी एन इंडिविजुअल और the money an individual or organization or a government receives from work. इनकम क्या है? कैपिटल इनकम और which either increases financial. कैपिटल इनकम क्या हुई? कैपिटल इनकम हुई जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को इंक्रीज करे और एसेट्स को डिक्रीज करे. एंड रिड्यूसेस द एसेट जस्ट लाइक बोरोइंग द मनी और डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है. एक्सपेंडिचर. द मनी एन इंडिविजुअल pays out for expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक तो होगा रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है थोड़ी खराब, मतलब खराब तो क्या ही होती है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंक्रीज नॉन प्रोडक्टिव होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस.
देखो भाई, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है जहाँ से जो होता है। ठीक है। डेफिसिट, डेफिसिट मतलब नुकसान, नुकसान ज्यादा हो रहा है भाई, तू ज्यादा उड़ा रहा है। बैलेंस में दोनों इक्वल है। सरप्लस मतलब तू ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है या तेरा रेवेन्यू ज्यादा है। फाइनेंशियल deficit financing, when a government finances expenditure by borrowing and raising taxes, borrowing money rather than taking it, known as physical financing. Budget deficit because when the government spends more than it collects, there are shortfall between the public revenue and public expenditure. डेफिसिट फाइनेंसिंग कि जब हम लोग बोरोड मनी, जब हम लोग बोरो कर लेते हैं मनी, बोरो मनी करते हैं। ठीक है। Physical deficit. It is a difference between the total revenue. Physical. या फिजिकल में हम लोग, फिजिकल में हम क्या कहते हैं, बोरोइंग्स को नहीं करते, बोरोइंग्स को नहीं करते, बोरोइंग्स हटा देते हैं हम बोरोइंग्स को। और ये में फिजिकल में बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूड। प्राइमरी डेफिसिट, difference between physical of the current and interest payment on previous borrowing. It is a difference between physical deficit of current year minus प्राइमरी डेफिसिट। और इसमें से तू अब वो भी तो हटाएगा, फिजिकल डेफिसिट में से वो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। हो गया। अरे यार ये हटा दो। टैक्सेशन, to run the government money is required, so the government employs tax in form of central government direct tax that are directly paid by individual and cannot be shifted to another individual entity. Form this one for the fulfillment of an indirect and is collected. GST is collected to intermediate such as radial zone who bears now. ओके भाई, डायरेक्ट, अब जैसे डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट इनकम में कौन सा आ गया, इनकम टैक्स आ गया, ये मेरा कॉर्पोरेट आ गया, ये तो गिफ्ट टैक्स आ गया। इनकम टैक्स ऑफ नाइन, it was introduced in 1860। It is a tax on the income of unregistered organization, income of individual। ये भी 1860 में आया। कॉर्पोरेट इज a tax, it is a tax on the income of unregistered। it is क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिमांड। जो टैक्स रेट है वो मेरा बढ़ता है, प्रोग्रेसिव विद इंक्रीज इन अमाउंट। टैक्स रेट बढ़ता है मेरा, टैक्स बढ़ता है मेरा अगर मेरी इनकम, इनकम भी बढ़ रही है, विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल इनकम टैक्स। ठीक है। ये होता है रिग्रेसिव, व्हेन द टैक्स रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, लॉटरीज। टैक्स रेट डिक्रीजेस, टैक्स रेट जो होता है, टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। इनकम मेरी बहुत ज्यादा हो रही है बट टैक्स रेट मेरा कम हो रहा है, प्रोपोर्शनल, व्हेन टैक्स बर्डन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल। होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट आ गया जीएसटी।
cascading effect of previous tax regime. It is a tax imposed on licensing states and on producing within the country. Sale tax. It is a tax, a type of indirect tax that the seller charges a buyer when selling. Tax on income wealth. Tax on goods and services. Progressive in nature. प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जैसे तो बढ़ेगा डायरेक्ट टैक्स ठीक है रिग्रेसिव इन नेचर रिग्रेसिव मतलब क्या होता है रिग्रेसिव मतलब ये हुआ कि तेरा टैक्स रेट बढ़ रहा है टैक्स रेट तेरा कम हो रहा है और तेरी इनकम बढ़ रही है जो मेरा जीएसटी है वो कौन सा आर्टिकल में है 279 12 में 279 279 279 में 279 ए में है मेरा जीएसटी इसमें 279 ए में 279 ए में 279 ए में मेरा जीएसटी 279 ए में है 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 279 12 ए में है मेरा जीएसटी तो ये 101 से हुआ था ये तो मुझे पता है 100 से क्या हुआ 100 से छोड़ दिया कितने हैं टैक्स रेट एक तो है मेरा 0 0 5 12 18 28 ठीक है जीरो एक है मेरा 0 5 12 18 28 एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है आईजीएसटी सेंट्रल जीजीएसटी टैक्स देयर आर एक्सक्लूसिव टैक्स ऑफ पॉइंट प्रीशियस स्टोन देखा 0.25 का तो रूबी पे एडिशनल टैक्स है एडिशनल 3% तो मेरा है ये गोल्ड पे 0.5 मेरा रूबी पे टू प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएस एक तो अल्कोहल हो गया टोबैको पेट्रोल हो गया मेरा जीएसटी क्या है एक 15 डिजिट का नंबर है और जो फाइनेंस मिनिस्टर करती है ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर की वो करती है काउंसिल होती है सिर्फ दो कंट्रीज हैं ऐसी जिन जहाँ पर ये वाला सिस्टम लागू है टू कंट्री लाइक जीएसटी जहाँ पे एक तो हो गया इंडिया एक हो गया कनाडा ठीक है ये इम्पोर्टेंट है एक तो हो गया मेरा इंडिया और एक हो गया मेरा कनाडा ये दो है हैज द हाईएस्ट टैक्स ऑफ 28% ठीक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिक्लेयर्ड फर्स्ट डे टू बी ऑब्जर्व एज 1 जुलाई जीएसटी कब मनाया जाता है जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई तो जीएसटी डे फूड ग्रेन्स पे 0% 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस 4 लाख से 8 लाख तक 5% 8 से 12 लाख तक है 10 अब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है एक तो हमारा बोरोइंग से आता है फिर हमारा इनकम टैक्स से आता है फिर जीएसटी से आता है फिर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से आता है और जाता कहाँ है स्टेट में जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है फिर सेंट्रल स्कीम्स में जाता है फाइनेंस कमीशन में जाता है फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है और डिफेंस हमारा डिफेंस में कितना है ये डिफेंस का हमारा है 8% इस बार का ठीक है A banking system is a system, is a network of financial institutions that provide financial services to सबसे पहले कौन सा बैंक बना था हिंदुस्तान हिंदुस्तान जनरल बैंक ऑफ बंगाल Imperial Bank of India was the later transition national bank was later transformed into 1955 was named as Imperial Bank जो था ना Imperial Bank of India उसको ही हम 1955 में हमने इसको एसबीआई का नाम दे दिया था the three banks which later merged to one
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बन गया था, एस्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट गवर्नर कौन था? स्मिथ। स्मिथ था, स्मिथ। प्रेजेंट। ये नहीं है, संजीव है। संजीव। नहीं नहीं, संजय, 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 इसका नाम संजय। संजय मल्होत्रा। संजय, संजय। हेडक्वार्टर का है। नेशनलाइजेशन ऑफ 1949 में हुआ था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सीवी देशमुख। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई जून। Issuer, vacancy, monetary authority, regulatory of financial banking, bankers bank, manage forex, bankers to the bank it to the government. Monetary policy refers to the policy that control the supply of credit money in the economy. Its objective is to correct the economic inflation and deflation situation. The primary role of monetary is to maintain the price stability. क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड परसुइंग ग्रोथ। ठीक है। इसके भी दो है, एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो मैं बता देता हूँ, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं बताऊंगा। मोराल सुएशन, मोराल सुएशन, मोराल सुएशन, मोराल सुएशन, मोराल सुएशन। मोराल सुएशन इज क्वालिटेटिव। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब क्वांटिटेटिव में भी दो प्रकार के हैं, एक तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट तो सीआरआर हो गया। सीआरआर मतलब कौन सा हुआ? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या हो गया? इतना पैसा, इतना पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना है। एक एसएलआर क्या हो गया? स्टैच्यूररी, स्टैच्यूररी, स्टैच्यूररी लिक्विड रेशियो, जो एक बैंक को अपने पास रखना है। बैंक को अपने पास रखना है। रिफाइनेंस कैपेसिटी, रिफाइनेंस कैपेसिटी भी एक डायरेक्ट है। रिफाइनेंस क्या? रेपो रेट तो हो गया जो बैंक आरबीआई बैंक को देगी। ठीक है। रिवर्स रहेगा जो बैंक आरबीआई को देगा। बैंक रेट लॉन्ग टर्म का होता है। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल, मार्जिनल स्टेट। ऐसे ये मार्जिनल कुछ होता है। मार्जिनल वो जो होता है वो एक दिन के लिए, एक वन नाइट के लिए, वन नाइट के बेस रेट। एमसीआर, एमसीएलआर। marginal requirement, the difference between the market value of security and the loan value. Credit rationing. RBI sets a maximum limit on loan and advancing of which commercial bank cannot exceed. Right. RBI sets a maximum limits on loans and advances of various categories which commercial bank cannot exceed. Selective SCC, SCC भी था क्या? Selective credit control. Marginal requirement. The difference between the market value, the difference between the market value, the important है यार. Marginal requirement, margin requirement. Difference between the market value of, यार क्या, नहीं, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? Difference between the market value of security and loan value. मार्केट वैल्यू और लोन वैल्यू के बीच में, मार्केट वैल्यू क्या चीज है, लोन वैल्यू क्या है? ठीक है। क्रेडिट rationing क्या है? RBI sets a maximum limit of loan and advance of various categories which commercial bank cannot exceed. Can selective, an instrument that affects the flow of credits to an instrument that affects the flow of credit to a particular sector. Qualitative rule, ये तो नहीं पर रेपो रेट तो मुझे पता है, रिवर्स पता है, बैंक पता है। Marginal standing facility ये था, which can borrow overnight loans for at 1%. Overnight loans at 1% higher than the current repo rate. At 1% higher than the current repo rate. At 1% higher, 1% higher, 1% higher. Marginal standing facility, reverse cash. Every bank has to reserve a fixed
Scenario भी पढ़ लेता है Absolutely. Every bank has to reserve a fixed percentage of its total deposit to RBI in form of cash. This is compulsory statutory. Every bank has to reserve fixed with itself in form of cash and gold. Open market operation. It is a system of buying and selling of government securities from the market. इन्फ्लेशन बैंक रेट को इंक्रीज कर दे तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दे या रेपो रेट को एमएसएफ ये क्या होता है मार्जिनल स्टैट्यूटरी यार क्या था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को तो इंक्रीज कर दे इन्फ्लेशन का रिवर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा सेल कर दे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हुआ उससे हुआ क्या डिफ्लेशन मुझे नहीं पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला मुझे नहीं पता गवर्नमेंट acceptance of deposit from the public provide advance with withdrawal lending facility transfer of funds issue of draft provide customer with local facility bank scheduled bank under the scheduled banks are banks that are registered under the second schedule of 1934 public banks are those which government more than 51 private bank in which government is less than 51 and bank has 51% of the following all those which have the headquarter outside India but have their branches in India like Hong Kong HSBC Hong Kong and Shanghai Bank Corporation headquarter कहाँ इसका लंदन में non-scheduled all the them which are not registered non-scheduled in the second schedule of RBI 1934. Money supply. Money supply or the money stock is the total amount of money available in the economy. Money supply or money stock is the total amount of money available in the economy at a specific time. Specified time. कितना money तेरी economy में है. Supply of money refers to stock of money inside held by the public at a particular point of time. Supply of money refers to stock of money. Supply of money refers to सप्लाई ऑफ मनी क्या किसको कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी पैसे का सप्लाई to stock of money held by public. The primary function of exchange क्या होता है Indian medium of exchange transfer value standard of different default payment medium of exchange employment factor input creation of redistributing contingent and M1 has a narrow concept, defined a traditional sense, controlled by the central. It is easily controlled by the central bank. M1 is measured as cash rupee notes in the saving and the deposits. The deposits. See, get सेकंड आता है मेरा एमएफ में क्या होता है एम वन में क्या था मेरा एम वन में आया मेरा लिक्विड मनी लिक्विड कितना है तेरे पास प्लस उतने बैंक में जो तेरे पैसे हैं M2 में मेरा क्या आ गया M2 में मेरा आ गया M1 प्लस सेविंग इन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ऑफ पॉपुलर विद post office is also included because people can withdraw their money
being on demand. However, it is not as liquid as demand deposit. Demand deposit with banks as they are not checkable accounts. ठीक है. Narrow money. Narrow is the most liquid form of money circulating in the economy. Most liquid है, most liquid है. ठीक है, जो मतलब ठीक है, लाइक कॉइन्स, नोट्स, डिमांड डिपॉजिट, ये हो गया. ठीक है. अब आया मेरा M3. M3 में मेरा क्या था? M3 में मेरा है M1 प्लस आर आर. आर मतलब नहीं, मतलब टाइमली डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट. M1 में क्या था? M1 में मेरा वो था, मनी था मेरा एक तो लिक्विड, और जो मेरे बैंक में टाइमली डिपॉजिट. आर लाइक एफ डी, आर डी, एफ डी, aggregate money resource. So M3 is also known as aggregate money resource. M4 में क्या है मेरा? M3 आया. M3 तो आया आया मेरा, और पोस्ट ऑफिस वाला भी आया. एक्सक्लूड नेशनल सेविंग. इसमें हम लोग क्या एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. M4 में हम लोग क्या नेग्लेक्ट करते हैं? M4 में हम ये करते हैं, नेशनल एक्सक्लूड कर देते हैं हमसे. मेरा हाथ चक्कर हो रहा है. Demand supply means a consumer desires to buy goods, service without any hesitation or pay. Demand is the number of products that the consumer are ready to willing to buy at a preferences and so are the basic preferences and choices are the basics of the demand, which can describe the term of cost, benefit, profit, price demand. Assuming other factors are a relationship between the price and demand. The commodity is known as price demand. प्राइस और डिमांड के बीच में. प्राइस और डिमांड. ठीक है. ठीक है. क्रॉस डिमांड. Issue between the demand of a given commodity, ठीक है, and the price of relative commodity is known as income. Income demand is assuming the factor is relationship between the customer's income and the quantity demanded by a commodity is known as income demand. And the quantity demanded by and the quantity demanded by commodity is known as income demand. Joint demand. क्या बोल रहा है? कंज्यूमर इनकम डिमांड. तो पता नहीं कौन कौन सी डिमांड है यार, ये डिप्राइव्ड. Alternate demand. Demand for a commodity is known as alternative, where it can be satisfied by using alternative different. For example, there are number of alternatives to satisfy the
Demand for clothes, switches of demand. Determinant of demands. Determinants of demands can determine price of goods and the income of buyer, expectation, taste and preference, price and related good, price of related goods. Law of demand. Law of demand की स्थिति law of demand की थी was given by law of demand की स्थिति थी अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल ने और क्या दिया भैया और भी उसने दिया ना वो ये मार्जिनल ये क्या बोलते हैं डिफरेंस को क्या कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड ने तो दी थी Oh yeah. Demand. Medicine always. फिर ऐसे हमको फिर ऐसे फिर यहाँ जल्दी खत्म करिए ऐसे. Types of supply. Individual supply is the amount of a product or a service that a single producer is willing able to sell at a given price during a specific individual. It is the amount of a product or a service that a single producer is willing to market supply. The total amount of product that producer are willing to sell at a specific point of a given period. Situation where two or more products are produced
from a common resource. Sure. Composite, a composite supply is two or more goods or services that are only sold as a set and cannot be sold individually. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. Determinant of supply. Price of given commodity, price of other goods, price of factors of production, state of technology, government policies, tax and concession. Objective of the form. Increase in supply, expansion of supply. Movement in supply curve. Increase in supply is caused due to factor other than increase in supply. Increase in supply is caused due to factors other than the price of the commodity. Expansion of the supply is caused by the rise in price of the commodity. It is a shift of supply curve from left to right. ये नहीं आता भाई मेरे को but मैं भी नहीं आता. Market can be characterized as where a couple of parties can meet, facilitate trade, establish price, generate income, protect transaction, allocating resources. Perfect, perfect, perfect. तो मैं कर दूंगा यार. ये भाई कौन कौन से एक तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोलिस्टिक होता है, एक मोनोपोलिस्टिक ज्यादा होता है. मोनोपोली में सिर्फ एक ही होता है. मोनोपोलिस्टिक अलग होता है. ओलिगो ओलिगो में भी दो तीन ही होते हैं, दो तीन वही डिसाइड करते हैं प्राइस. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक परफेक्ट ओलिगो मोनो लार्ज नंबर ऑफ. ठीक है. Oligopoly few favors a large number of buyers interdependent price restriction on the entry but freedom on exit. ठीक है. मोनो मोनोपॉन्सी सिंगल बायर बैरियर इन एंट्री. सिंगल बायर एक ही बंदा लेने का. सिंगल सेलर. मोनोपॉन्सी एक इम्पोर्टेंट है. मोनोपोसोनी ओलिगोपोसोनी. Huge buyers, huge purchaser, huge sellers, monopolistic, mono, few sellers होते हैं, few purchasers of many, huge buyers or group dominates the market. ठीक है. Actually, it refers to the total income of all the goods that are produced by the merchant period of time. The sum of all the factors that generate during the production of years. Final good. Final goods are the final good is created by the combination of all inputs used in production and includes capital, labor, intermediate goods. Consumption goods. Consumption goods are those goods that are used for satisfaction of needs and not for investment purposes. These include foods and souls like clothes and consumption. Capital goods are those which are used in and helps in the process of production of goods and services. Intermediate those are used either for resale or for the consumption durable, consume durable. Arises from the customer's demand for durable goods, though they can be used by businesses contract consumer services. Circular flow of income. What's a circular flow of income? अरे यार ये भी तो था. एक तो लेबर हो गया. कैपिटल चाहिए मेरे को. फिर लैंड चाहिए मेरे को. फिर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए मेरे को. ठीक है. प्रोडक्ट एंड सेल प्रोडक्ट. Produce and sell product to the household, hire input and resource from the household. Output, goods and services. Buy product from the firm, provide input to the firm. ठीक है.
circular flow of energy is a concept in the microeconomy that refers to the purchase process by which income flows through an economy. The process is based on the fact that richer people buy more things than the factories from the factories and shops, and their earnings are then used to buy more from the producers. And these amounts are used to buy more and more from other producers and they continue to consumption goods and those goods and services that are used for satisfaction of current need and not for investment purpose. Current need के ऊपर focus कर रहे हैं. They include food and household and services like goods. Capital goods are those final goods which are used and helps in the process of production of other goods and services. Capital goods are those final goods which are used and helps in the process of production of other goods and services. Indirect goods are those which are used either for the resale or for the further consumer durable. Consumer are goods that arises from the customer's demand for durable goods, though they can be used for businesses. The term used to contract customers. Factor cost is the total cost of all the factors of the production consumed or used in the product in producing a good or services. Factor cost is the total cost of all the factor production. What is the factor cost? Factor cost is the total cost of all the factor production. Market price is the price at which the gold is sold, includes the price of enterage, interest, input price, profit, domestic GDP, the total money, no, no. GT, it will change in price of common basket of goods and services. It is also called a market basket and is used for the industrial worker, urban and with agriculture.
लेबर ब्यूरो, इंडस्ट्रियल लेबर ब्यूरो। अच्छा अच्छा, इसका भी बता देता हूँ मैं। फिर इसका आ जाता है मेरा, अगर मैं WPI का कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाता है मैन्युफैक्चर गुड्स। गुड्स मतलब प्राइमरी प्राइमरी आर्टिकल्स, मतलब प्राइमरी प्राइमरी आर्टिकल। और लास्ट में मेरा आता है वो वाला फ्यूल, that represents a price or basket of food. Office of Economic Advisor, Office of Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion, Commerce and Industry, or Office of Economic Advisor, Economic Advisor. Top 5 countries in HDI, just Sweden हो गया एक तो। Just to recall the three: access to knowledge, education, standard of living, long and healthy life. Health. Amartya Sen and Mehboob al Haq was published 1990 में आया था, और ये UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। थ्री इंडिकेटर आर गिवन इक्वल वेट इज 13 183, इंडिया रैंक 134, 134 आया इंडिया, ठीक है 134। एक तो लॉन्ग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आ गया, हेल्थ आ गया, हेल्थ आ गया, हेल्थ आ गया, नॉलेज आ गया, और लाइफस्टाइल आ गया, ठीक है। अब उसमें भी इंडिकेटर लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, एक्सपेक्टेंसी ऑफ ईयरिंग ऑफ स्कूल एंड मीन ईयर, ठीक है, एजुकेशन में। फिर GNI आ गया, GNI गॉस गॉस नेशनल इंडेक्स, जो कंज्यूमर बिहेवियर। Consumer theory is a concept that deals with how people choose to spend their money, provided their tendency and consumer theory manifests how people may choice provide resistance their environment means a good that is useful for the consumer. Utilize utilities are part of what one wants to wants in a community. Purchase seeks utility when purchasing. The more utility they get, the more likely they are to buy something. Total utility. Total is a total evaluation of all positive and negative of a decision making situation. This is used in economics to determine the best course of action. The total utility of the product is the sum of individual entities. The higher the total utility, greater is the satisfaction achieved by the consuming product. जितनी ज्यादा टोटल टोटल यूटिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर को उतनी ज्यादा कस्टमर marginal utility is the change in the satisfaction of a customer when the price of the particular good changes. It does not refers to money, even though economists use them as a marginal utility to make easier for people to understand. Marginal is a change in the satisfaction of a customer when the price of the particular goods changes. It doesn't refers to money, doesn't refer, even though economists use the term marginal utility to make easier. Law of diminishing marginality. किसने दिया था? अल्फर्ड अल्फर्ड मार्शल ने दिया था, अल्फर्ड मार्शल ने दिया था लॉ। There is a marginal utility from consuming each additional unit of commodity declines as its consumption increases. When total unity increases, marginal utility decreases.
When total utility is 9, minus is 0. So it becomes goes on decreasing, my unit becomes negative. ये क्या बोल रहा है? Law of Fire, law of Fire is a principle in economy that states that marginal rate of substitution, marginal rate of substitution will decrease with increasing consumption of goods. Production and cost. Production is a process by which inputs are changed into outputs. Production is carried out by the manufacturer. The enterprise obtain different inputs like machine, labor, raw material, etc. It utilizes inputs to the ठीक है. Vary a single input and keep all other inputs constant. Then for different level of that input, we get different level of output. The relationship between the variable input and out keeping all. Suppose we vary a particular input and keep all other inputs constant. Then for different level of that input, we get different level of there's a relationship between the variable input and out, keeping all other inputs constant. Cost function refers to the relationship between the input cost. Cost function refers to the relationship between the input cost and the output. In simple terms, the functional relationship between the cost and output refers to its cost function. Types of cost. Total cost, total fixed cost. The cost that a firm incurred to employ these fixed input is called the total fixed cost. Whatever amount of the money that firms produces, this cost remains fixed for the firm. Total average available is used to पता नहीं क्या क्या लिखता है short time. लॉ ऑफ वेरिएबल किसने दिया था? लॉ ऑफ वेरिएबल किसने दिया था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजल वेरिएबल चेंज होते जा रहा है वेरिएबल प्रपोर्शन मुझे नहीं याद नहीं आ रहा. When TP decreases, MP starts falling. AP increases when I can. ये वाला इम्पोर्टेंट है यार. पीओपी भाई यार ये कितना सारा है. ये खत्म नहीं हो रहा है तो. It refers to the outcome of all it refers to the outcome of all total transaction occurring between the resident and the rest of the world. Specific period of time. ठीक है मतलब total transaction from a resident to the पूरा world. It specifies specific record of all the pay receipts and the payment made.
For a country, the bill specify whether the country has an excess or shortage of funds. Because it gives an indication whether the company's export is more than its import, or vice versa. If there is a positive outcome at the end of the year, the money is transferred to the foreign exchange reserve. If there is a negative outcome, the same is drawn from the country's foreign. अच्छा, अगर नेगेटिव होगा तो हम हमारे फॉरेक्स से काट लेगा वो, और पॉजिटिव होगा तो फॉरेक्स में ऐड हो जाएगा, फॉरेक्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इजी था. And these forex reserves are not capable of fulfilling the negative balance. It is known as BOP crisis. BOP crisis क्या होता है? अगर तेरा forex कम पड़ गए भाई तेरे, ठीक है, forex कम हो गए, and economy tries different means to solve the crisis. BOP account, ये important, बस ये कर दो फिर मैं जा रहा हूँ. Current account transaction relating to goods and services and income related to it. Trade in goods include export and import. Export और import include होता है, ठीक है. Trade and services include factored incomes and non-factored incomes. Transfer payment are the receipts which the resident of the company gets for free. यानी क्या लिखा था? Institutional history. Well,